Welcome back, students. Since we were discussing about heat energy, so the word temperature comes in mind, right? What exactly is temperature? And just to clear it up, heat energy and heat is actually different from the temperature. So, how is it different? We are going to study it right now. What is temperature? Temperature is a measurement. Temperature क्या है? Measurement है of hotness and coldness of a body. कि हमारी बॉडी जो है वो कितनी कोल्ड या कितनी हॉट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर यूज करते हैं, टेम्परेचर की टर्म यूज करते हैं. Temperature is how hot or cold something is. Temperature does not depend on the size of the object. ठीक है, टेम्परेचर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की साइज पे डिपेंड नहीं करता. A cup of water and a bucket of water can have the same temperature. ठीक है, यानी अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो a cup of water और a bucket of water जो है डिफरेंट होते हैं साइजेस में, लेकिन उनके टेम्परेचर सेम हो सकते हैं. Two objects at the same temperature can have different amount of heat energy. ठीक है, आपके जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनका टेम्परेचर देखा जाए तो दे कैन हैव सेम टेम्परेचर, लेकिन उनके अंदर कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है दैट कैन बी डिफरेंट, दैट कैन वेरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दैट देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर दैट आई पुट इन द यू नो अंडर द सनलाइट. ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, इधर हम लिखते हैं, जो कि सनलाइट में है. अ ग्लास ऑफ वाटर दैट इज अंडर डायरेक्ट sunlight and the other one is in the refrigerator. So which one of these glass of water will have more energy in it? Okay. So if we think about having energy in the particles, it is because of their movement, right? So we will say कि sunlight में पड़े हुए जो glass of water है, that one will have more energy in it. Why? Because the particles inside the this glass that is in the sunlight has absorbed more of heat in it, और उसकी वजह से वो particles में उसके movement आने लग जाती है. So that is why the glass of water that is under the sunlight has more energy in it as compared to the glass that is in the freezer, in the refrigerator. जब आप किसी चीज़ को कूल करते हैं या उसे किसी चीज़ को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स की मूवमेंट को बिल्कुल रोक देता है. That means if the movement of particles is not happening, there is no energy being produced there. Okay, let's move on to the next slide and discuss how is temperature measured. Measure यानी आप टेम्परेचर को किस तरह measure कर सकते हैं. It can be measured using a thermometer. ठीक है. So what is a thermometer? A thermometer, which is a long tube having mercury filled in or sometimes alcohol, is a tool used to gauge a substance temperature. ठीक है, मर्करी या फिर कोई और सब्सटेंस इसमें यूज किया जाता है in order to find out the temperature of a certain thing. When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downward. क्या होता है कि जो liquid इस thermometer के अंदर present है, right? The blue thing that you can see. If the
environment outside the thermometer is hot, ठीक है, तो क्या करेगा ये वाला जो फिलिंग है थर्मामीटर के अंदर, ये केमिकल है, इट विल स्टार्ट टू राइज, ये ऊपर की तरफ को मूव करने लग जाएगा. And if the temperature is actually cold, right, so it will start to move downwards, ठीक है. And the measurements that are written over here tells us how much the cold or hot a thing or a substance is, right. So the most widely used temperature scales are Fahrenheit, इसको हम F से भी डिनोट करते हैं, एंड सेल्सियस, इसको हम C से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, हमने क्या पढ़ा है इस स्लाइड में? इस स्लाइड में हमने वी हैव लर्न दैट टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और इस चीज़ को आप you guys also use it यानी in your home, you also have it in your home, or when you go to the doctor, it is used for checking the temperature of your body, ठीक है. If it's too hot, it will tell you that you have a temperature or you're feeling sick, and if it's not, then it means you are healthy. All right, so let's move on to the next slide and discuss how the thermometer can tell us about the different temperatures. For example, if the environment is cooled, या cool है या cold है, विंटर्स हैं, इट्स स्नोई, और कह लें आप ठंडी हवा चल रही है या बारिश हो रही है, सो ऑन द थर्मामीटर द इंडिकेशन विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है, कि ये नीचे को टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है. लेकिन इफ इट्स हॉट आउटसाइड, इट्स समर आउटसाइड, द टेम्परेचर विल कंटिन्यू टू राइज, ठीक है. टेम्परेचर क्या करेगा? इट विल राइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड दीज substances. ओके, ये जो मरकरी है, इट मूव्स when the heat is applied to it. So this is an instrument that we can use in order to check the temperature of whether our environment or our body or any other thing. I hope you guys understand this, and I will see you in another video with more interesting facts about science.